Ladies and gentlemen, distinguished guests and award winners, everyone who holds cinema close to their heart, we welcome you all to the 70th National Film Awards. This program, on behalf of the Ministry of Information and Broadcasting, this evening we celebrate the phenomenal achievements and milestones in Indian cinema for the year 2022. These achievements, prestigious awards, recognize the hard work, talent and dedication of all who have contributed to the art of filmmaking. I'm Shubhendu Ghosh with my colleague Mamata Chopra. धन्यवाद शुभेंदु। नमस्कार, आदर, अभिनंदन, आभार। देश के प्रतिष्ठित 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के इस पावन अवसर पर आप सभी की गरिमामय उपस्थिति के लिए आप सबका हार्दिक आभार। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से मैं ममता चोपड़ा आप सभी का इस सभागार में हार्दिक स्वागत करती हूं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का 70वां संस्करण है ये, जिसमें वर्ष 2022 के लिए सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 3 श्रेणियों, सिनेमा पर बेस्ट राइटिंग, नॉन फीचर फिल्म और फीचर फिल्म के लिए अवार्ड्स प्रदान किए जाएंगे। और शुभेंदु, सबको इंतजार रहता है इन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का। Absolutely, and Mamta, this is the 70th edition of the National Awards. What a magnificent journey, ladies and gentlemen, it has been over the decades. Since its inception in the year 1954, the National Film Awards have stood as a beacon of excellence and celebration of artistic and technical merit of our artists, actors, directors, producers, and also writers, technicians, and everyone else, everyone who has a role to play in completing the magic that we witness on the screens. बिल्कुल, और क्यों ना हो, हमारे देश की ताकत ही तो है ये विविधता में एकता। इसी को समर्पित है ये शाम। लेकिन ये न सिर्फ सिनेमाई उत्कृष्टता की परिचायक है, बल्कि भारत की गौरवपूर्ण और बहुभाषी सह अस्तित्व का भी बोध कराती है ये शाम। सिनेमा देश के हर कोने में गरीब से लेकर अमीर तक समाज के हर छोर पर खड़े व्यक्ति पर अमिट छाप हमेशा ही छोड़ती आई है। और शुभेंदु, फिल्में मनोरंजन और मनोविनोद के साथ साथ सामाजिक पहलुओं पर भी संदेश देने का महत्वपूर्ण दायित्व निभाती आई हैं। Cinema has a role to play, Mamta, in all our lives, the way we get inspired to do new things in our respective fields. So without further ado, let's begin this very special evening. A tribute it is to the artistry and magic of Indian cinema. Cinema, in the words of iconic filmmaker Mamta Satyajit Ray, he says, cinema is the language of sight and sound. It transcends all man-made boundaries, speaks to the soul, expresses emotions that words alone cannot express. वाह, कितने गहरे शब्द है ना ये। और वाकई सिनेमा तो हमारे समाज का सौंदर्य बोध ही है। ये न केवल प्रभावकारी जन परिवर्तन के माध्यम के रूप में, अपितु जनमानस के साथ भावनात्मक जुड़ाव के माध्यम के रूप में भी सिनेमा ने हमेशा से अपनी अनोखी पैठ बनाई है। ऐसी फिल्में भी हैं जो कई दशकों बाद भी हमारी स्मृतियों में रची बसी हुई हैं। और साल 1954 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ये जो सफर शुरू हुआ, इनका उद्देश्य भी तो यही है ना कि सिने जगत की इन बहुआयामी शख्सियतों को सम्मान प्रदान करना, जिनके कारण ये सिनेमा समाज के हर व्यक्ति के अंतर्मन में अपनी पैठ बना पा रहा है और ये संभव हो पा रहा है। Absolutely, Mamta. And when they called India's diversity its true identity, I think it's beautifully represented through its cinema, cultural diversity, linguistic diversity, and diversity of thoughts and ideas. बिल्कुल शुभेंदु, और यहाँ पर हम ये भी बताना चाहेंगे कि 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के लिए इस बार बहुत ही बेहतरीन फीडबैक भी मिला है। अगर मैं फीचर फिल्म कैटेगरी की ही बात करूं तो 32 भाषाओं में, जी हाँ, 32 लैंग्वेजेस में 309 एंट्रीज, 309 एंट्रीज प्राप्त हुई हैं। और जाहिर है कि इतनी बड़ी तादाद में जो एंट्रीज मिली हैं, वो ये भी दिखाता है कि हमारे देश की सांस्कृतिक और भाषाई संस्कृति कितनी समृद्ध है। And celebration of the diversity continues, ladies and gentlemen. In the non-feature film category, we received 130 entries across 17 languages.
Now, these films, while shorter in format, are equally powerful in their storytelling. They provide a platform to the diversity of voices and stories that very often otherwise remains on the margins. We also had, Mamta, writing in cinema. We had 26 books, 10 film critics who are competing in the best writing on cinema category. Authors and critics engage, as we know, with cinema beyond the screen, offering reviews, critiques, perspectives to us all, help audiences engage with cinema at a much deeper level. Their work ensures that cinema is not just seen, but also absorbed and understood, studied, appreciated, and taken far deeper. These large number of entries, distinguished guests, are symbolized. They reflect not just the enthusiastic participation, but also the sheer scale of creativity across our nation. Every entry, whether a feature film, a non-feature film, or a piece of writing, showcases how cinema is an integral part of India's culture. और शिवेंदु, अगर मैं थोड़े गंभीर लहजे में कहूं तो सिनेमा समाज का वो दस्तावेज है जो वर्तमान के साथ चलता है, जो इतिहास के अनछुए पहलुओं को भी खंगालता है और साथ ही भविष्य को भी अपनी कल्पना शक्ति के दायरे में उकेरता है। ये हम सबकी जिम्मेदारी ही है कि ये समाज के वर्तमान को और अधिक सकारात्मक और रचनात्मक आयाम दे। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार उन कहानियों को प्रतिबिंबित करते हैं जिन्होंने हमें प्रेरित तो किया ही है, लेकिन साथ ही किसी सकारात्मक बदलाव की भी पहल की है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हम अपने निर्णायक मंडल के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं, जिनके मूल्यांकन और विचारशील निर्णयों ने इस वर्ष के पुरस्कार चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। Absolutely, we celebrate the National Film Awards, the 70th edition. When we talk about awards, Mamta, the role of the jury becomes hugely important. Let me take this opportunity to invite and welcome our distinguished jury chairpersons on the stage. The jury for Best Writing on Cinema Award was led by noted film historian Shri Gangadhar Mudaliar. The jury for the non-feature films by renowned filmmaker Shri Neela Madhav Panda. The feature film section of the National Film Awards jury was headed by eminent producer and director Shri Rahul Ravel. Before we proceed further, let's take a moment to appreciate the outstanding films that we've enjoyed all through the year, the films that have been recognized by the National Film Awards for the year 2022. Ladies and gentlemen, please sit back comfortably and turn your attention to the screen for this special presentation. In a very few places, and Dadara is a wonderful example of what can happen to save this bird. বিশ্ব দৰবাৰত মানে বিখ্যাত এগৰাকী মহিলা আৰু আমাৰ কাৰণে এইটো এটা সৌভাগ্য আৰু বাইদেউ যেতিয়া 2005 চনৰ 29 জুনৰ দিনা তেওঁ বিশ্ব শান্তি নোবেল বঁটাৰ বাবে মনোনীত কৰিছে আৰু সেইদিনাখনি ঐতিহাসিক ইস্যুটো মানে ৰাইজে গম পাইছে মিছন বিৰো বলে আমি এটা সজাগ সচেতন হিচাপে কেওধনী বেছ বিজালি থপ মানে এইবিলাক কৰিব লাগে মই কৈছো आवाज ऐक श्वास घेणारे पाट कुजबुजणारी झाड काय सांगते ती ये क्या है दूरदर्शन
You pick the time. Tick 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 tick. Tick 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 tick. The average age of a girl getting trafficked has dropped from 16 to 12. मैं पहले घर जाएगा। हाँ, आपका फैमिली तो आएंगे ना, आपके घर जाएंगे। ওর তো এমনি ভাবে ছেড়ে দিলে হবে না, ও তো পুরোটা এটার মধ্যে বাইরে চলে যাচ্ছে, তাহলে ওর সাজাটা হলো কোথায়? ला संपूर्ण मुंबईच्या गिरणगावामध्ये संप झाला. जर शिवसेनेने तो संप जर केला असता तर पुढे दत्तात्रमण आलेच नसते. 2.5 लाख कामगार होते, ते 1 लाख कामगारांना नोकऱ्यावर घेतलंच नाही. म्हणजे मोठं नुकसान झालं त्या संपामुळे, म्हणजे त्यांची वाटच लागली. अगर उस टाइम वॉश हो जाता तो मतलब मेरी आई का विजन बच जाता. कैसे कैसे लोग हैं यार, उसने मेरा 1 मिनट में पूरा लाइफ बदल दिया। परी हूँ मैं, उड़ती रहती हूँ। ഈ വിളക്ക് ഞാൻ കെടുത്തിയാൽ ഒതല്ലോ ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെ അവൾ ഇടയുന്നു. का घर तो बन गया, कमरे भी बढ़ गए, पर इस एक घर में न जाने कब हम सबने अपने अपने कमरों में खुद के घर बना लिए. क्या हुआ? कैब के लिए वेट कर रहा हूँ. आ जाओ, छोड़ देता हूँ. मीटिंग में ऐसे ही जाते हो? तो मैं पहनता हूँ, उसमें भी प्रॉब्लम आपको. बाप बेटे के झगड़े में ना मैं फंस गई. मैं चाहती हूँ इस बार की होली हम सब साथ मनाकर इस घर से निकले. पौंडीचेरी अचानक से? कभी कभी तो लगता है एक ही घर में रहते हैं, फिर भी कोई किसी को नहीं जानता.
रोगी को ठीक करे। किए तुम सिद्धार्थ नाथ एटी किस स्कूल मु जानबाई पीएचडी डॉक्टर अच्छे। डॉक्टर दिसुन तू डॉक्टर कर आमचं शेवटचं बोलणं चिठ्ठ्या लिहिणं पिस्तूल हो य इट्स ओके इट्स ओके कोण जाते घरी He is the biggest criminal. He is the biggest businessman. This is the biggest national issue. मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। ರಕ್ತದಿಂದ ಬರೆದಿರೋ ಕತೆ ಇದು. ಶಾಯಿಯಿಂದ ಮುಂದುವರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ একজন মানুষ নিরুদ্দেশ তাকে নিয়ে আমরা এইসব আলোচনা নাই বা করলাম। আলোচনা থেকে আলো আর চোনাটাকে আলাদা করাটাই আমার প্রফেশন ম্যাডাম। খুব জ্বালিয়েছিল কাবেরী মিসিং হওয়ার পর। সরকার কি আর কোনো সুস্থ লোক খুঁজে পায় না? আমি আবার আসবো। গাহৰি মাংসটো হানি ফালে খৰিকাত পুৰি খোৱা মজাটো কোনো মাছত নাই। মাছ খালেতো পেটটো নোলায়। இளையராஜா கேட்டு உட்கார்ந்துட்டுப்பான். யோ பழம் மேல என்ன ஒரே சத்தம். உள்ள பேர் அடிச்சு விட்டேன். சோபனா என் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு, சின்ன வயசுல இருந்து என் ஃப்ரெண்டு. ஐ லவ் யூ சொன்னாளா? கிஸ் அடிச்சீங்களா? கிஸ் சொன்னா என்ன, இந்த இடத்துல இப்படி ஒரு கிஸ் கொடுத்தா நம்ப முடியலடா. நம்ம தான் நம்மள ரொம்ப கம்மியா நினைக்கிறோம்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலா நம்ம ஒரு ஆளு தான் நினைக்கிறேன். प्राचीन काल से हमारे बीच कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो अस्त्रों में भरी हुई हैं।
नमस्कार। देश की सिनेमाई उत्कृष्टता का जश्न राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के 70वें संस्करण में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से हम माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मंच पर आसीन विशिष्ट अतिथिगण का भी हृदय से स्वागत करते हैं और साथ ही संपूर्ण भारतवर्ष से आए हुए पुरस्कृत कलाकार, निर्णायक मंडल एवं अन्य अतिथिगण का भी हार्दिक अभिनंदन। ये पुरस्कार समारोह भारतीय फिल्मों की श्रेष्ठता और रचनात्मकता से परिचित होने के साथ साथ सिनेमा जगत की महत्वपूर्ण शख्सियतों से रूबरू होने का भी अनुपम अवसर है। Ladies and gentlemen, as we take this award ceremony forward, may I request you to put your hands together to welcome the dignitaries and distinguished jury on the stage. Honorable President Srimati Draupadi Murmu, Union Minister for Information and Broadcasting, Railways, Electronics, Information Technology, Shri Ashwini Vaishnav, Minister of State for Information and Broadcasting and Parliamentary Affairs, Dr. L. Murugan, Secretary, Ministry of Information and Broadcasting, Shri Sanjay Jaju, and chairpersons of the jury, Shri Rahul Ravel, Shri Neela Madhav Panda, and Shri Gangadhar Mudliar. और कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए सबसे पहले मैं माननीय सचिव सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय श्री संजय जाजू को स्वागत संबोधन प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती हूं। Honorable President of India, Sammaniya Srimati Draupadi Murmu ji, Honorable Minister of Information and Broadcasting, Railways, IT and Communications, Shri Ashwini Vaishnav ji, Honorable Minister of State for Information and Broadcasting, Dr. L. Murugan ji, respected jury chairpersons and members, esteemed members of the film industry, distinguished guests, and friends from the media. The 70th National Film Awards. Today's ceremony is a celebration of the boundless creativity, dedication, and passion that has made Indian cinema a global powerhouse of storytelling. At the outset, I'd like to extend a special welcome to our Honorable President. Ma'am, we are deeply honored by your presence. It adds great significance to this evening. I also extend my heartfelt congratulations to all the award winners. Your remarkable talent and hard work have enriched the fabric of Indian cinema, and you all stand as torchbearers of this vibrant and evolving industry. आज के इस विशेष अवसर पर दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता श्री मिथुन चक्रवर्ती जी का भी हम विशेष स्वागत करते हुए हम उनके सिनेमा में अविस्मरणीय योगदान को सम्मानित करते हैं। उनका प्रेरणादायक सफर हमें सिखाता है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि समाज की आत्मा का प्रतिबिंब भी है। आपकी उपस्थिति आज के इस कार्यक्रम को और भी विशेष बना रही है। Friends, the National Film Awards is a unique celebration, an opportunity to acknowledge the incredible diversity, creativity, and innovation that define Indian cinema. This year, we received 309 films in 32 different languages in the feature film category and 128 films in 17 languages in the non-feature category. This vast diversity speaks volumes about the richness of our cultural landscape and the inclusivity of our storytelling. Our jury had the challenging task of selecting the finest works from this exceptional pool of talent. To them, I extend my deepest gratitude for their dedication and commitment to upholding the highest standards of cinematic excellence. As we honor the cinematic achievements of 2022, we also recognize the resilience of our film industry. In the face of adversity, particularly during the global pandemic, Indian cinema not only persevered but thrived. Through stories of hope, determination, and resilience,
filmmakers continue to captivate audiences, showcasing the indomitable spirit of Indian cinema. इस समय हमारी फिल्म इंडस्ट्री का योगदान सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं है। भारतीय सिनेमा ने न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। भारतीय फिल्मों को वैश्विक स्तर पर जिस सराहना और प्रशंसा के साथ देखा जा रहा है, वह हमारे देश की सांस्कृतिक शक्ति और कहानी कहने की अद्वितीय शैली को दर्शाता है। The Ministry of Information and Broadcasting remains deeply committed to supporting Indian cinema through various initiatives. One of our key steps has been the amendment to the Cinematograph Act, which will modernize the film certification process and also help in combating piracy. Looking ahead, we are excited to organize the upcoming International Film Festival of India in Goa in November this year, and the marquee event, World Audiovisual and Entertainment Summit, WAVES, which will take place in February 2025. This summit will be a global platform for leaders, creators, and innovators in the media and entertainment industries to explore new opportunities for collaboration and growth, which will solidify India's place in the global entertainment ecosystem. आने वाले वर्षों में हम भारतीय सिनेमा के उज्जवल भविष्य की ओर देख रहे हैं। हमारे पास अनगिनत कहानियां हैं जो अभी भी कहे जाने की प्रतीक्षा कर रही हैं, और यह हमारा कर्तव्य है कि हम उन कहानियों को उपयुक्त मंच दें। मैं इस अवसर पर आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप नए विचारों को अपनाएं, रचनात्मक सहयोग को बढ़ावा दें और भारतीय सिनेमा को विश्व सिनेमा के मानचित्र पर और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाएं। Lastly, I am pleased to inform you that despite the delays caused by the pandemic, the process for the 71st National Film Awards for 2023 is well underway, with over 500 entries received this time. We remain committed to ensuring that the process continues smoothly, recognizing the exceptional talent that defines our industry. As we celebrate the achievements of this year, let us all look forward to the limitless possibilities that lie ahead. Indian cinema is at the pivotal moment with a bright future full of innovation and creativity. Once again, on behalf of the Ministry of Information and Broadcasting, I warmly welcome you all to this special evening. Let us honor the past, embrace the present, and look forward to the stories that are yet to be told. Thank you, and enjoy the evening ahead. Thank you. Thank you, Secretary Sir, for telling us about the highlights of the awards and also the context in which Indian cinema assumes importance. सम्मानीय अतिथिगण, आइए अब उस बहुप्रतीक्षित पल में कदम रखें जिसके साथ ही 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के वितरण का आरंभ हो रहा है। अत्यंत कृतज्ञ भाव से मैं आदरणीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को आग्रह करती हूं कि वे पुरस्कार प्रदान करने के लिए मंच पर आगे आएं। And may I also request Union Minister Shri Ashwini Vaishnav, Minister of State Dr. L. Murugan, Secretary Shri Sanjay Jaju to kindly join Honorable President for distribution of the awards. पुरस्कार वितरण के आरंभ में सबसे पहले सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। These awards aim to promote understanding, appreciation and critique of cinema as art form. In order to develop it further, they seek to encourage the dissemination of knowledge, information on cinema and related activities among the masses through book reviews. इस श्रेणी में सर्वप्रथम है सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का पुरस्कार और फिल्म समीक्षा की बेहतरीन योग्यता के लिए पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं श्री दीपक दुआ। Deepak Dua's writing provides a deep insight into sensibilities of the films that he reviews. Well researched, his columns and articles ably capture the nuances of cinema that he appraises. स्वर्ण कमल का सम्मान प्रदान किया जा रहा है फिल्म समीक्षक दीपक दुआ को। The next award in this category, Best Book on Cinema, recipient is Shri Anirudh Bhattacharya for the book Kishore Kumar, The Ultimate Biography, being awarded
the Golden Lotus for the book. नई पीढ़ी के पाठकों के लिए जाने माने गायक किशोर कुमार जी की प्रतिभा तथा फिल्म संगीत का जश्न मनाती है पुस्तक किशोर कुमार दी अल्टीमेट बायोग्राफी। बचपन से ही हम किशोरदा के गीतों को सुन सुनकर बड़े हुए हैं। उन्हीं की जीवनी पर आधारित ये पुस्तक, जिसके लिए पुरस्कार का सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। और साथ ही बढ़ते हैं अगले पुरस्कार की ओर, क्योंकि जीवन के हर पहलू को बेहद सरलता से छुआ है और ये उनके जीवन की कठिन यात्रा को आसानी से समझने में भी मदद करता है। फिल्म के प्रकाशक हैं हार्पर कॉलिंस पब्लिशर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। हार्पर कॉलिंस की ओर से पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मंच पर पधार रहे हैं श्री उडियन मित्रा। आपको भी प्राप्त हो रहा है स्वर्ण कमल का सम्मान। HarperCollins has published some of the finest writers from the Indian subcontinent and around the world, publishing some 250 new books every year. बेस्ट राइटिंग के बाद अब कार्यक्रम का अगला पड़ाव गैर फीचर फिल्म श्रेणी के पुरस्कार। इस कैटेगरी में 4 विशेष उल्लेख समेत कुल 25 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। We begin with the special mention being presented to the producer of the Assamese film Hargila, the greater Edgerton Stock. On behalf of Pi Entertainment, Ms. Meena Mahanta will be honored with a certificate of recognition. To save this bird. The film brings to light efforts to save the greater Edgerton Stock from extinction. लुप्तप्राय ग्रेटर एडजर्टन स्टॉक को बचाने के भारत के जमीनी स्तर के प्रयासों को डॉक्यूमेंट करती है ये असमी भाषा की फिल्म हरगिला, द ग्रेटर एडजर्टन स्टॉक। विशेष उल्लेख के अंतर्गत इसी असमी फिल्म हरगिला, द ग्रेटर एडजर्टन स्टॉक के निर्देशक श्री पार्था सारथी महंत भी प्राप्त कर रहे हैं प्रमाण पत्र। Dr. Partha Sarathy is a police officer and social worker with over 30 years of service. Excels in various fields, including arts, literature, and cinema. The third award of this category is conferred on the Assamese film Birubala, which to Padma Shri, to Amy Barua Production Society, Ms. Mala Barua being awarded with a certificate. যেতিয়া 2005 চনৰ 29 জুনৰ দিনা তেওঁ বিশ্ব শান্তিৰ নোবেল বঁটাৰ বাবে মনোনীত কৰিছে। বিৰুবলৈ আমি এটা সজাগ সচেতন হিচাপে মানে এইবিলাক কৰিব লাগে। सभी प्रकार की सामाजिक बुराइयों और अंधविश्वासों के खिलाफ लोगों को जागरूक करने वाले बीरूबाला राभा के जीवन पर रोशनी डालती है ये फिल्म बीरूबाला, विच टू पद्मश्री। इसी असमी फिल्म की निर्देशिका मिस एमी बरुआ को भी इनकी कृति के लिए विशेष उल्लेख के प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जा रहा है। The film highlights Birubala Rabha's courage and determination to single-handedly fight the scourge of witch hunting in rural Assam. पद्मश्री का सम्मान प्राप्त बीरूबाला का जीवन आज सबके लिए है एक मिसाल, जिस पर आधारित है ये फिल्म, जिसे पुरस्कार प्राप्त हो रहा है। गैर फीचर फिल्म श्रेणी का अगला अवार्ड बेस्ट स्क्रिप्ट के लिए हिंदी और इंग्लिश की फिल्म मोनो नोआवारे को प्रदान किया जा रहा है। बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर श्री कौशिक सरकार प्राप्त कर रहे हैं रजत कमल। The film is recognized for the sensitive portrayal of events
leading to acceptance of loss and impermanence of life as seen through the eyes of a child. Moving on, ladies and gentlemen, for the best narration voiceover, Shri Sumant Shinde is being awarded with Silver Lotus for the Marathi film Murmurs of the Jungle. तुझ्या आजूबाजूचा आवाज ऐक काय सांगते ती The voiceover connects the emotions of very delicately, effectively to the mysterious intonations and oral textures. जंगल भी बोलता है और कैसे उसे अपनी फिल्म में प्रदर्शित किया है, इसी को प्रदर्शित करती ये फिल्म और अब गैर फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार। और ये बेहद खास है क्योंकि फिल्म फुर्सत के लिए अपने 9वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के रूप में संगीत निर्देशक श्री विशाल भारद्वाज के नाम रजत कमल का सम्मान। Romantic musical soundscape infusing fantasy into a futuristic narrative. The next award is for Best Editing, being presented to Shri Suresh Aras for Kannada film Madhyantar, being awarded with Silver Lotus. You pick the time. Tick, 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 tick. The editor excels in creating an engaging narrative through the use of effective shot selection, rhythmic flow, and admirable pace. कहते हैं फिल्म एडिट टेबल पर बनती या बिगड़ती है और ये फिल्म कितनी खूबसूरत बनी इसीलिए इनको पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। Moving on, the next award is Best Sound Design, being conferred to Shri Manas Chaudhary for the film Yan in Hindi and Malavi, being recognized with Silver Lotus. श्री मानस चौधरी ने कहानी में पीड़ा व्यक्त करने के लिए शानदार सोनिक्स के साथ न्यूनतम ध्वनि का उपयोग करते हुए जो साउंड डिजाइन किया, उसी के लिए वे हासिल कर रहे हैं इस राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का सम्मान। जोरदार तालियां हो जाएं। और सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी के लिए फिल्म मोनोनो आवारे के सिनेमेटोग्राफर श्री सिद्धार्थ दीवान को रजत कमल से नवाजा जा रहा है। फिल्म में एक बच्चे की आंखों देखी घटनाओं के संवेदनशील चित्रण के लिए ही श्री सिद्धार्थ दीवान ने हासिल किया है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का सम्मान। और मान्यवर गैर फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए स्वर्ण कमल गोल्डन लोटस का सम्मान प्राप्त कर रही है फिल्म फ्रॉम द शैडोज की निर्देशिका मिस मिरियम चैंडी मेनाचेरी। Age of a girl getting trafficked has dropped from 16 to 12. ना आप तो घर जाएंगे और तो एमबी भाभी छाड़ दिला भाभी। एक अत्यंत संवेदनशील विषय पर आधारित फिल्म लापता लड़कियों की खोज के लिए किए गए कई अथक प्रयासों और मानसिक संघर्षों को संवेदनशील रूप से चित्रित करने के लिए ही मिस मिरियम चैंडी मेनाचेरी के लिए जोरदार तालियां। And taking the awards further, the next award, Best Short Film, being presented to HM Production for the film Sunyota in Assamese. On behalf of HM Production, Shri Hiranmoy Gogoi will receive the Silver Lotus.
सुनियोटा यानी शून्य, बिना बातचीत के, बिना इंटेंस इमोशंस को प्रदर्शित किए ही दुख की अनकही बारीकियों को छूती है ये फिल्म सुनियोटा। For the same film, Sunyota, in Assamese, director Navapan Deka being awarded with the Silver Lotus. The film is a poignant and moving portrait of love and loss, subtly uses shades of grey silences to explore the turmoil in a life resigned to fate. किसी अपने को खोने का गम, अपने से दूर जाने का गम प्रदर्शित करती ये फिल्म। और मान्यवर इस श्रेणी में बेस्ट एनिमेटेड फिल्म है जेबी प्रोडक्शंस की साइलेंट फिल्म अ कोकोनट ट्री। जेबी प्रोडक्शंस की तरफ से पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं श्री रॉबिन्सन थॉमस। आप पा रहे हैं रजत कमल। इस फिल्म में शब्द नहीं बोलते बल्कि रंग बोलते हैं, स्केचेस बोलते हैं जिनमें रंग भरती है ध्वनि, म्यूजिक, और ये बता रही है एक पेड़ की कहानी और कैसे मनुष्यों के लिए प्रासंगिक है ये। इस फिल्म के निर्देशक और एनिमेटर श्री जोशी बेनेडिक्ट को भी प्रदान किया जा रहा है रजत कमल। The film is recognized for bold use of colors, sketches and timing along with stylized animation techniques. कई बार बहुत गहन विषय को बहुत साधारण तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है जो हमारे हृदय को भी स्पर्श करे। इसी का उदाहरण देती है ये फिल्म द कोकोनट ट्री। Distinguished guests, let's take the journey forward. The next award is for the best non-feature film promoting social and environmental values. Goes to the English film On the Brink Season 2, Ghariyal. On behalf of people and the Habitats Trust, Ms. Roshni Nadar Malhotra will receive a Silver Lotus. What they discover may be the key to this extraordinary reptile's survival. अगर पर्यावरण को लेकर आप भी गंभीर हैं तो ये फिल्म आपके लिए भी है, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती ये फिल्म न केवल घड़ियाल पर ही केंद्रित है बल्कि भारत भर में विभिन्न लुप्तप्राय प्रजातियों की दुर्दशा पर भी रोशनी डालती है। एक अत्यंत गंभीर विषय जिसे लेकर हम सबको सतर्क होने की जरूरत है। And for the same film, director Ms. Akanksha Sood Singh is been awarded with Silver Lotus. The film recognized for chronicling the journey of lesser-known crocodilian species, as we know, Ghariyal, through the everyday effort of the unsung heroes. Shall we put our hands together for the filmmaker? और अब बात बेस्ट डॉक्यूमेंट्री पुरस्कार की, और इसके लिए मराठी फिल्म मर्मर्स ऑफ द जंगल को चयनित किया गया है। फिल्म के निर्माता और निर्देशक श्री सोहेल अभिजीत वैद्य को मिल रहा है रजत कमल का सम्मान। गोष्ट ऐक, तुझ्या आजूबाजूचा आवाज ऐक, काय सांगते ती? You could hear the manner in which the sounds of jungle were recreated as whispering trees pass down stories of gods and ancestors. A visual poetry unfolds, offering a masterfully crafted piece of new age storytelling. कला और संस्कृति पर आधारित सर्वश्रेष्ठ फिल्म है कन्नड़ा फिल्म रंग वैभोगा। निर्माता श्री सागर पुराणिक को रजत कमल। ಅದು ನಡೆದು ಬಂದ ಹಾದಿ. Celebrating the beauty of India's culture, the film is a well-researched study of the temple dance traditions
of Karnataka. और इसी कन्नड़ा फिल्म रंग वैभोगा के निर्देशक श्री सुनील पुराणिक को भी रजत कमल से नवाजा जा रहा है। The filmmakers being awarded for showcasing creativity and cultural heritage of Karnataka to exceptional depths. Shall we put our hands together for the filmmakers on the stage? और मान्यवर, कला और संस्कृति पर आधारित सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए मराठी फिल्म वारसा का भी चयन किया गया है। इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक श्री सचिन बालासाहेब सूर्यवंशी को रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है। ही युद्धकला जिवंत राहावी म्हणून काठीने सराव सुरू ठेवला. The fascinating film Varsa highlights the traditional martial arts and the manner in which these skills are transferred through generations. तो महाराष्ट्र की संस्कृति को प्रदर्शित करती ये फिल्म वारसा। For the best biographical historical reconstruction compilation film, Marathi film Anki Ek Mohenjo-daro being awarded on behalf of producer the Goa Studio and Ashok Rane Production, Shri Rajesh R. Bednekar to receive the Silver Lotus. सुरू होते पहिली पाळी मोठ्या डौलात साक्षीरे गरगरा मला कामगार पुस्तक फ्री भेटल का म्हणजे दिल्ली कामगार गेल्याबरोबर फिल्म आणखी एक मोहनजोदाड़ो जो मुंबई के गिरणगांव की कहानी प्रस्तुत करती है। गिरणगांव वो क्षेत्र जहां मिल मजदूर रहते हैं और इस फिल्म में आपने मिल मजदूरों की ही आवाज को प्रस्तुत किया है। एक डॉक्यूमेंट्री है आणखी एक मोहनजोदाड़ो। And for the same film, director Shri Ashok Rane being awarded with the Silver Lotus. फिल्म के निर्देशक श्री अशोक राणे ने गिरणगांव मिल मजदूरों की मुंबई के लोकाचार को जीवित रखने में उनके योगदान को प्रस्तुत करते हुए हासिल किया है अपना चौथा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। एक बार जोरदार तालियां। और अब निर्देशक की पहली सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार कन्नड़ा फिल्म मध्यांतर के लिए निर्देशक श्री बस्ती दिनेश शेनॉय को स्वर्ण कमल गोल्डन लोटस से नवाजा जा रहा है। The film, ladies and gentlemen, is recognized for the exceptional command over dialogue and visual storytelling in the short film format. निर्देशक की पहली सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री बस्ती दिनेश शेनॉय। On to our next award. Award for the best non-feature film goes to Hindi and Urdu film Aina. Producer and director Shri Siddhant Sareen receiving the Golden Lotus. अगर उस टाइम वॉश हो जाता तो मतलब मेरी आई का विजन बच जाता। कैसे कैसे लोग हैं यार। करुणा और संवेदनशीलता के साथ सुनाई गई जीवन संघर्ष की कहानी है फिल्म आईना। धैर्य और दृढ़ता की एक सहानुभूतिपूर्ण कहानी जो देखने वाले के हृदय को स्पर्श करती है। Thank you, Honorable President and distinguished guests. The award ceremony has just begun. For now, I would request Dr. L. Murugan, Honorable Minister of State for Information and Broadcasting, to address the gathering. Honorable President of India, Madam Srimati Draupadi Murmuji, Honorable Minister of Information and Broadcasting,
Sri Ashwini Vaishnavji, Sri Sanjay Jajuji, Secretary, Ministry of Information and Broadcasting, Dada Sahib Phalke Award winner Sri Mithun Chakravarti ji, juries, chairpersons, members, all award winners, media persons, namaste, vanakkam to you all. Today it is an immense privilege to stand here on the occasion of the 70th National Film Awards, which undoubtedly is one of the most prestigious film award in India. This National Film Awards, first of all, I congratulate to the juries, how they dedicated and how they are worked, tireless work, and they identified the real talents here, so that the talent people are awarded here. And the National Film Awards have always been beacon of excellence, recognizing outstanding contributions across various facets of filmmaking and honoring the diversity that defines Indian cinema. I want to mention a few words about our Mithun Chakravarti ji. I would like to extend my heartfelt congratulations to Mithun Chakravarti ji as an alumnus of FITT Pune. It is in our INB Institute, and last year I visited Tashkent. In the Tashkent streets, the people are dancing Jimmy Jimmy. So how he is famous in the out of country. So I congratulate once again Mithun Chakravarti ji. Our Indian cinema is how now is emerging in a global. Our Indian cinema is playing a major role in the world cinema now. Particularly the South Indian cinemas, Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada. So these movies now tremendously, they are doing very hard work, and the movies are not only the regional movies, the movies are pan-India movies, the movies are the world level movies. Last year, few of movies went for the Oscar awards from South Indian movies. So I don't want to mention the South Indian because of the regional movies, how they are playing a major role. Our Prime Minister Sri Narendra Modi ji's vision and our Minister Sri Ashwin Vaishnav ji's guidance, our department we want to be product to the producers. So for that, our ministry brought an amendment in Cinematography Act after 40 years to protect from the piracy. So this is a help to the business and ease of doing business and the cinema industry. Today is the AVGC sector is transforming from the industry is a multi-billion-dollar global industry. We have seen how the VFS are using these nowadays new cinemas. For that, our government of India, our ministry is going to establish a national center for excellence for AVGC in Mumbai. It is a world-class, our institute is going to come. And also, we are in this all broadcasting medias, whether it is in traditional media, whether it is in cinema, whether it is in AVGC, whether it is in satellite. So we want to bring up one umbrella. So for that, a WAVES conference, world level summit is going to happen in this year. So for the promotion of the
industry, for the promotion of the sector, media and entertainment sector. So this summit is going to help as a creator economy in our country. And is the Film Facilitator Office is promoting co-production in India, and our government, our Prime Minister's guidance and our Sri Ashwin Vaishnaviji's, the Indian cinema in this media and entertainment sector is leading the sector. Once again, I congratulate to each and every award winners to their remarkable achievements. Your contribution continue to push the boundaries of Indian cinema, making it an industry that we can all take pride in. Today's celebration will serve as a reminder of the power of cinema to inspire, challenge and entertain. Let us all celebrate the nature of the art of filmmaking, ensure that Indian cinema reaches new heights while staying true of its roots. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, Dr. Murugan. Ladies and gentlemen, we now move on to the next category of film awards. May I now invite and request Honorable President Srimati Draupadi Murmu and the dignitaries to come forward for the remaining awards, please. मान्यवर, कार्यक्रम के इस पड़ाव में फीचर फिल्म श्रेणी के अंतर्गत पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आरंभ विशेष उल्लेख यानी स्पेशल मेंशन के साथ मलयालम भाषा की फिल्म कदिकन के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त कर रहे हैं श्री संजॉय सलील चौधरी। വിളക്ക് ഞാൻ കെടുത്തിയാൽ ഒതല്ലോ ഇടയുന്നു. और ज्यूरी की ओर से ये स्पेशल मेंशन है इस फिल्म के लिए प्रयोग की गई धुनों के लिए। फिल्म में गैर परंपरागत नवीन धुन रचने के साथ ये उम्मीद जगाते हैं कि धुनें अभी जिंदा हैं। और हिंदी फिल्म गुलमोहर के लिए अपनी अभिनय कला के लिए विशेष उल्लेख का प्रमाण पत्र प्राप्त कर रहे हैं जाने माने अभिनेता श्री मनोज बाजपेयी। जाने कब हम सबने अपने अपने कमरों में खुद के घर बना लिए। Manoj Bajpai displays skilled precision to showcase all the hidden aspects of human emotions, making the character come alive, a part to remember. Best feature film in language other than English, Schedule of the Constitution. For the best Tiva film, producer and director Dr. Bobby Sarma Barwa being awarded with Silver Lotus for the film Sikesal. In the film, the dream to educate the people in a remote village of Ulukunchi becomes the purpose of life of a retired primary school teacher. Shall we put our hands together for the filmmaker? और स्पेशल मेंशन से आगे बढ़ते हुए फीचर फिल्म श्रेणी में अब सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की बात। सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म है कार्तिकेय 2। फिल्म के निर्माता अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स LLP एंड पीपल मीडिया फैक्ट्री LLP की तरफ से श्री अभिषेक अग्रवाल प्राप्त कर रहे हैं रजत कमल। ఈ కార్యానికి వైద్యుడైన శ్రీకృష్ణుడు ఎంచుకున్న ఇది మైథాలజీ కాదు, హిస్టరీ. The film is a masterful blend of religion and science, delivering a captivating mythical thriller that stands out in Telugu cinema. तो सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म कार्तिकेय 2 और इसी फिल्म के निर्देशक श्री चंदू मोंदेती भी प्राप्त कर रहे हैं रजत कमल का सम्मान। धर्म और विज्ञान का कुशल समागम प्रस्तुत करती है ये फिल्म। फिल्म को एक ऐसी बांध कर रखने वाली थ्रिलर का रूप देता है इनका ये कला जो तेलुगु सिनेमा में अनोखा है और इसी के लिए ये प्राप्त कर रहे हैं रजत कमल का सम्मान। फिल्म पोनियन सेल्वन पार्ट 1 को जाता है सर्वश्रेष्ठ तमिल फिल्म का पुरस्कार। फिल्म के निर्माता मद्रास टॉकीज एंड लाइका प्रोडक्शंस की तरफ से जाने माने एंटरप्रेन्योर और फिल्म प्रोड्यूसर श्री सुभास्करन अलीराजा को रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है।
ஆதித்த கரிகாலன் இந்த நேரமும் படையுடன் வரலாம். குந்தவை ஒரு ஒற்றை. The film delves into the life and times of the Chola dynasty with tremendous visual appeal and emotional drama. And for Ponniyin Selvan Part 1, producer and director Shri Mani Ratnam being awarded with Silver Lotus. चोल राजवंश की जीत पर भावनात्मकता और दृश्य की भव्यता को बेहद ही सौंदर्यपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करने के लिए पद्मश्री से सम्मानित श्री मणिरत्नम ग्रहण कर रहे हैं अपना 7वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार. जोरदार तालियां. और अब सर्वश्रेष्ठ पंजाबी फिल्म बागी दीती प्रोड्यूसर जी नेक्स्ट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से श्री रविंद्र नारायण रजत कमल प्राप्त कर रहे हैं. मेरा होना ना होना जरूरी नहीं, जरूरी है आजादी के जज्बे का दुखते रहना. A slice of history and literature depicting the freedom struggle of our motherland. पंजाबी फिल्म बागी दीती जो देशभक्ति से ही जुड़ी एक कहानी प्रस्तुत करती है और फिल्म के निर्देशक Director of the film, Shri Mukesh Gautam, also being awarded with Silver Lotus. सर्वश्रेष्ठ पंजाबी फिल्म बागी दीती जो आजादी के संग्राम में गदर आंदोलन में एक 14 वर्षीय लड़की की हिम्मत की सम्मोहक कहानी प्रस्तुत करती है. सर्वश्रेष्ठ उड़िया फिल्म के तौर पर फिल्म दमन को पुरस्कृत किया जा रहा है. जेपी मोशन पिक्चर्स के श्री दीपेंद्र समल प्राप्त कर रहे हैं रजत कमल. आपण मैंने ये खाली ड्यूटी करने आसे ये लोक मान जीवन बचाऊँ आ लोक मान सुरक्षित शुणा हेले The film Daman deals with the malaria eradication program in the inaccessible tribal areas of Odisha. और फिल्म के निर्देशक श्री विशाल मौर्य को भी रजत कमल से नवाजा जा रहा है. फिल्म का टाइटल है दमन, दमन यानी दुर्गमा अंचलारे मलेरिया निराकरण, जो ओडिशा के दुर्गम नक्सल बाहुल्य आदिवासी अंचल मलकानगिरी में मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम से ही संबंधित है. और फिल्म के निर्देशक श्री देवी प्रसाद लेंका को भी रजत कमल प्रदान किया जा रहा है. Through the character of Dr. Siddharth, the film captures the challenge of development intervention in the remote Malkangiri, Odisha. किसी भी प्रदेश के दुर्गम क्षेत्र में जब इस तरीके के कार्यक्रम चलाए जाते हैं और उन पर फिल्मकार की नजर पड़ती है तो जाहिर है फिल्म पाती है इस तरह के पुरस्कार. और मलयालम भाषा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म के तौर पर उर्वशी थिएटर्स की फिल्म सऊदी वेलाका CC.225/2009 का चयन किया गया है. फिल्म के प्रोड्यूसर हैं श्री संदीप सेनन, जिन्हें रजत कमल से पुरस्कृत किया जा रहा है. The thought-provoking film dramatizes the pendency of cases in Indian courts, makes an earnest call for reforms of the responsive justice system. Shall we put our hands together for the filmmaker on the stage? फिल्म के निर्देशक श्री तरुण मूर्ति भी ग्रहण कर रहे हैं रजत कमल का सम्मान. भारतीय अदालतों में लंबित मामलों पर एक गहन और बांध कर रखने वाली फिल्म है ये, जो संवेदनशील न्याय प्रणाली का भी आह्वान करती है. एक बार जोरदार तालियां. Moving on to the award for the best Kannada film goes to KGF Chapter 2, Srimati Shailaja Vijay receiving Silver Lotus on behalf of producer Hombale Films LLP. Criminal, he is
the biggest businessman. This is the biggest national issue. KGF 2 involves a battle, as we know, among numerous gangs for possession of a vast collection of wealth. एक पीरियड एक्शन फिल्म है ये, जिसे इसकी असाधारण कल्पना और अविश्वसनीय तकनीकी बारीकियों के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार प्राप्त कर रही है फिल्म गुलमोहर। फिल्म के निर्माता स्टार स्टूडियोज, ऑटोनॉमस वर्क्स एंड चॉकबोर्ड एंटरटेनमेंट की तरफ से श्री विक्रम दुग्गल रजत कमल ग्रहण कर रहे हैं। क्या हुआ? कैब के लिए वेट कर रहा हूँ। आजा, छोड़ देता हूँ। मीटिंग में ऐसे ही जाते हो तो मैं पहनता हूँ, उसमें भी प्रॉब्लम आपको। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म गुलमोहर हमारे वर्तमान समाज की संवेदनाओं के साथ साथ रिश्तों को भी गहराई से प्रदर्शित करती है। फिल्म गुलमोहर के लिए जोरदार तालियां। The next award, Best Hindi Film and Best Screenplay, being given to director and dialogue writer Shri Rahul V. Chittala for Hindi film Gulmohar again, receiving the Silver Lotus. तो फिल्म गुलमोहर जिसको जा रहा है ये दूसरा पुरस्कार, और ये फिल्म अपने संवादों से विशेष छाप भी छोड़ती है। इसमें लेखक हर किरदार को अभिव्यक्त होने के उचित अवसर देता है। फिल्म के डायलॉग्स कितने इंपॉर्टेंट हैं हम सभी जानते हैं, और गुलमोहर भी इसका एक उदाहरण। The award for the best Bengali film given to Kaveri Antardhan, Shri Surinder Singh, receiving Silver Lotus on behalf of Surinder Films Private Limited. নিরুদ্দেশ তাকে নিয়ে আমরা এইসব আলোচনা নাই বা করলাম। আলোচনা থেকে সরকার কি কোনো সুস্থ লক্ষণ পায় না? उथल पुथल भरे समय को संवेदनशील तरीके से दिखाने और अभिनेताओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ही श्री सुरेंद्र सिंह प्राप्त कर रहे हैं ये सम्मान। And director of film Kaveri Antardhan, Shri Kaushik Ganguly, being awarded with the Silver Lotus. Set against the backdrop of the Naxalbari uprising, the film been recognized for sensitive handling of tumultuous time. Kaushik Ganguly, known for his realistic cinema, is a multiple National Film Awards winner. Let's put our hands together for him, ladies and gentlemen. सर्वश्रेष्ठ असमिया फिल्म के तौर पर फिल्म एमुथी पुथी का चयन किया गया है, और निर्माता मेटानॉर्मल मोशन पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड और रूहान फिल्म्स की तरफ से रजत कमल ग्रहण कर रहे हैं श्री सुनील कुमार अग्रवाल। हानि फाले पूरी का पूरी फॉर्म होता तो पूनू मासोत नाय। उनकी पूर्ति की जटिल प्रवृत्ति पर इसकी शानदार कथा के लिए फिल्म एमुथी पुथी है सर्वश्रेष्ठ असमिया फिल्म। और फिल्म के निर्देशक मिस कुलानंदिनी महंत को भी रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है। As we put our hands together for the filmmaker, there's a film that recognizes and is being awarded for its brilliant narrative, complex nature of human ambition and fulfillment. And the award for the Best Action Direction Award being given to stunt choreographer Shri Anbumani MM and Shri Arivumani MM, receiving Silver Lotus for Kannada film KGF Chapter 2, Shri Anbumani MM receiving the Silver Lotus. एक हाई ऑक्टेन एक्शन वाली एंटरटेनिंग फिल्म KGF Chapter 2, जिसमें भावनात्मक पक्ष पर भी जोर दिया गया। फिल्म का प्लस पॉइंट है स्टंट कोरियोग्राफी। And now for KGF Chapter 2, Shri Arvumani MM receiving the Silver Lotus. Shall we put our hands together? Ladies and gentlemen, the film sets a new benchmark for action cinema with its meticulously crafted sequences that are both exhilarating
and visually stunning. The Best Choreography Award being given to choreographer Sri Satish Krishnan, receiving Silver Lotus for the Tamil film Tiruchitram Balam. For portraying conversations through elegant choreography without either glorifying or losing the sense of the characters. सर्वश्रेष्ठ वीएफएक्स सुपरवाइजर के तौर पर श्री जयकर आरुद्रा को हिंदी फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा के लिए रजत कमल से नवाजा जा रहा है। प्राचीन काल से हमारे बीच कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो अस्त्रों में भरी हुई है। Through the breathtaking visual effects, Brahmastra tells the story of a young man, Shiva, and his mission to protect a weapon of enormous energy from dark forces. और इसी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ वीएफएक्स सुपरवाइजर श्री विरल ठक्कर को भी फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा के लिए रजत कमल का सम्मान। As we put our hands together, the film recognized for creating a utopian multiverse that seamlessly blends Indian epics and mythology together. और इसी टीम के श्री नीलेश गोरे सर्वश्रेष्ठ वीएफएक्स सुपरवाइजर के तौर पर फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा के लिए प्राप्त कर रहे हैं रजत कमल का सम्मान। फिल्म में बेहतरीन विजुअल इफेक्ट से एक आदर्श मल्टीवर्स यानी ब्रह्मांड की रचना की गई, जिसमें भारतीय महाकाव्य और पौराणिक कथाओं को भी निर्बाध तरीके से जोड़ा गया। An award for the Best Lyrics Award being given to lyricist Shri Naushad Sadar Khan for receiving Silver Lotus for Haryanvi film Fauja. गीतकार नौशाद सदर खान ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले हमारे शहीदों के जज्बे को अपने गीत में शब्दों के माध्यम से बखूबी पिरोया है। On to the next much awaited award for the Best Music Direction Background Score goes to Shri A.R. Rahman, receiving Silver Lotus for the film Ponniyin Selvan Part 1 in Tamil. The visionary Indian composer presents an audacious blend of traditional contemporary musical styles that suspense audiences in a continuous state of mystery and adventure. And that's not saying enough for Shri A.R. Rahman. A.R. Rahman के लिए 7वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 7वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, जोरदार तालियां। Award now for the Best Music Direction Songs being presented to Shri Preetham, receiving Silver Lotus for the film Brahmastra Part 1 Shiva in Hindi. मौलिक रचना, शानदार संगीत और युवाओं को जोड़ने वाली आधुनिक शैली का संगीत, श्री प्रीतम को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ स्क्रीन प्ले लेखन के लिए हिंदी फिल्म गुलमोहर की डायलॉग राइटर मिस अर्पिता मुखर्जी को रजत कमल से पुरस्कृत किया जा रहा है। 2 मंजिलों का घर तो बन गया, कमरे भी बढ़ गए, पर इस एक घर में न जाने कब हम। Gulmohar makes a special mark with its dialogues that reverberate with intangible silences to make up an extraordinary world. फिल्म गुलमोहर के नाम ये 30वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदया एवं सम्मानित अतिथिगण। और अब मैं केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से विनम्र आग्रह करते हुए उन्हें संबोधन प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती हूं। माननीय मंत्री जी।
Namaskar. Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji, my colleague Minister Dr. L. Murugan ji, Secretary Jaju ji, Chairpersons of the juries, Shri Rahul Ravel ji, Shri Neelamadhav Panda ji, Shri Gangadhar Mudliar ji, Dada Saheb Phalke Awardee, हम सब के चहेते मिथुन दा, jury members, all the award winners, friends from the media, and esteemed guests. There are so many famous personalities sitting here. How many can I acknowledge? मैं प्रयास करता हूँ करण भाई का, I acknowledge you, I acknowledge प्रसून भाई, प्रसून जोशी जी, शर्मिला जी, मणिरत्नम जी, रहमान जी, Vajpayee ji. There are so many of the stars present here. I welcome you all to this great National Film Award ceremony. It's truly an honor to be a part of this prestigious National Film Award ceremony. My heartfelt congratulations to all the award winners, artists, technicians, and all stakeholders in the film industry. You have made outstanding contributions to the world of entertainment. And special thanks to the members of the jury, esteemed members who ran a very objective selection process. My heartfelt congratulations to Mithunda for being honored with the prestigious Dada Saheb Phalke Award. Dada, your life is your message. You have made extraordinary contributions to cinema. Your contribution to society and your role as Member of Parliament are all exemplary. You are truly an icon for our society, both on the screen and off the screen. These National Film Awards celebrate the hard work and brilliance of filmmakers. Every exceptional film is the result of great teamwork. It involves actors, directors, cinematographers, VFX artists, sound designers, editors, and many more stakeholders. This collective effort creates the magic of cinema. Many of the films honored today were initiated during the COVID pandemic period. These films showcase the resilience of our society, resilience of our country. 9 debut directors are recognized for their bold storytelling. Our young innovators, whether in the film industry or startups, are driving the creative ecosystem. और साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के पहले ऐसे लीडर हैं जिन्होंने क्रिएटिव इकोनॉमी को पहचाना और रिकॉग्नाइज किया, और अभी कुछ ही महीनों पहले नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड सेरेमनी की थी दिल्ली में, जिसमें जो नए क्रिएटर्स हैं, जो एक नए तरीके से दुनिया में भारत की एक नई पहचान बना रहे हैं, भारत के कल्चर को, म्यूजिक को, फूड को, बहुत सारे अलग अलग जगह के ट्रेडिशंस को जो दिखा रहे हैं, उन सब क्रिएटर्स को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सम्मान दिया था कुछ ही महीनों पहले। और मैं आपके सामने ये विषय रखना चाहूँगा कि मोदी जी की सरकार और विशेषकर इस ऐतिहासिक तीसरी टर्म में इस क्रिएटर इकोनॉमी को एक नया आयाम देने के लिए संकल्पबद्ध है। इस नए मीडियम से जो डाइवर्स टैलेंट है हमारे देश का लिए सबसे पहला वेव्स अवार्ड कुछ ही महीनों बाद में दिया जाएगा। उसकी सारी डिटेलिंग आप सबके सामने रखी जाएगी, और इसके लिए जो 25 चैलेंजेस लॉन्च किए गए, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है उसमें। बाय नाउ मोर देन 5,000 पार्टिसिपेंट्स हैव ऑलरेडी registered for participation in the Creators Economy Challenges launched for WAVES program. We also understand the employment potential of this new economy. इस नई क्रिएटर्स इकोनॉमी की जो रेल्स है, these rails have been set up in the Digital India program. The rollout of 5G, the rollout of fiber,
the way our technology journey has happened in the last 10 years, that has set the big rails for, very strong rails for this new economy. And now the soft skills will be set up in a very innovative way. Just recently, Honorable Prime Minister approved the first National Center of Excellence. Imagine our entire technical ecosystem was created by institutions like IITs, IIITs. Our managerial ecosystem was created using the IIMs. These are the institutions which have developed some of the finest technical and managerial talent in the world. Many of these talented alumni of IITs are leading global companies like Google, like Microsoft, and now we need to create similar institutions for the creative economy. So we will be launching the first Indian Institute of Creative Technologies, IICT. And where else should it be except Mumbai? It has to be in Mumbai, right? Amchi, Mumbai. That's where that's the cultural capital, that's where the creative energies are so well established. That's where the first IICT will be established. The Maharashtra government has already given land for it. The lease agreement is under signature by the Secretary of INB Ministry and the Maharashtra government. So very soon the first IICT will be started, and like many IITs that have created a great educational ecosystem for the country, there will be many IICTs throughout the country which will be like IITs, like IIITs, like IIMs and like AIMS. They will be the centers of excellence. They will create the talent pool which will serve not only our country but also win over the media and entertainment world, throughout the globe. Friends, our government is working on developing the film industry with a three-pronged approach. The first approach is talent development. And we know the world is changing very fast. We need talent. I watched the movie Kantara. So much technology is used in it, right? I watched the movie RRR. It's like movie which is driven by technologies, which is driven by creative technologies. So this is the latest trend. I am told, I am new to I understand the film industry very little. So my friends and the professionals tell me that today practically 40% of a movie is technology, creative technology behind it. So let's create a talent pool. Let's create a talent pipeline which becomes the best talent in the world, like our semiconductor talent, like our IT talent, like our design talent. Similar talent we create in the film industry. So first pillar of our strategy is creating a very strong talent pipeline. So talent is the first pool, first pillar, first prong of our strategy. And IICTs will play a very big role in that. The second pillar is infrastructure. We all know that creating a good film, developing that magic, requires a very different type of infrastructure. And we have seen the power of some of the old and very prestigious film studios which created wonderful movies in the gone by years. Time has come when we create a new infrastructure which can be equated with the best in the world. And that is the second challenge we have taken as part of our strategy. And I will request the entire industry, the stalwarts of this industry, to come forward, give your ideas, share your thoughts, help us design a new infrastructure which will really create a foundation for a very vibrant film industry in the coming years. The third pillar is all about simplification. The third pillar of this strategy is about simplification. You have seen how much simplification has happened in the business world, in so many different sectors. Now time has come
when somebody who wants to do a film, make a film on using railway as the background, or some very nice archives or some nice archaeological places in the background, or some forest in the background, the permissions must become very simple. The permissions must become simple. It must become very easy for the creative economy community to be able to go out and set up the sets and start creating, start weaving that magic. So the third big focus will be about creating structures, creating institutions which help you get all the permissions in a very simple way. So developing talent, developing infrastructure, and simplifying the processes. These will be the three pillars around which we will develop the film industry, and we are very open-minded government. We request all of you to please come forward with your ideas and thoughts, and we'll work together, friends. Finally, I would like to say, film heritage and many of the films which were created in the past, we really need to preserve it. So recently we had a very interesting, very important meeting in Mumbai, and we have taken some very important decisions. Prasoon Bhai was part of that meeting. We have taken those decisions to make sure that each and every part of our heritage is very well preserved. The films, the posters, the equipment which were used and in those times, the newspaper clippings which came during those times, we must preserve all that, because that's a very valuable treasure which cannot be created again. We'll create new heritage, but we must protect what we have already created. So friends, with these words, I would like to once again congratulate all the winners, and I request the film, media and entertainment world to come together and work with us. Together, we will take our media and entertainment industry to new heights. The blend of tradition and modern storytelling will keep our culture thriving and inspire the generations to come. Thank you very much. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, friends, taking the special evening forward, I once again request Honorable President and distinguished guests to come forward to confer the next set of awards for feature film category. The award for the best makeup goes to Shri Somnath Kundu for the Bengali film Aparajito, receiving the Silver Lotus. You can see in the visuals an inspired and imaginative makeup that brings characters come alive on screens. Ladies and gentlemen, let's put our hands together for the artist. प्रोस्थेटिक मेकअप के लिए मशहूर श्री सोमनाथ का ये पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइनर का पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं मिस निकी जोशी। गुजराती फिल्म कच्छ एक्सप्रेस में कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए आप प्राप्त कर रही हैं रजत कमल का सम्मान। ये स्टोरी नहीं खबर था मैंने। बढ़ते हूँ चलाओ। हाँ बाई। આ ભાઈઓનું કામ નહીં। લે બુલેટ, તને ખબર પડે? Kutch Express has taken great care to incorporate the minute intricacies of the folk world of Gujarat in its costumes. सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन डिजाइन का पुरस्कार बंगाली फिल्म अपराजितो के लिए श्री आनंद आध्या को रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है। I've never seen a movie like this. In the film, you witness a lifelike ambience and meticulous handling of various visual components that bring the era alive on screen. जीवंत माहौल, विभिन्न दृश्य तत्वों के कुशल प्रबंधन के लिए
पर्दे पर उस युग को जीवंत करते हैं। सर्वश्रेष्ठ एडिटिंग का अवार्ड मिल रहा है मलयालम फिल्म आटम को। श्री महेश भुवनेन्द्र प्राप्त कर रहे हैं रजत कमल। The remarkable use of silences and its control over the film space at the same time shows the maturity of the editor in the film. मान्यवर, बेस्ट साउंड डिजाइन के लिए तमिल फिल्म पोनियन सेल्वन पार्ट 1 चयनित की गई है और साउंड डिजाइनर श्री आनंद कृष्णमूर्ति रजत कमल पुरस्कार से सम्मानित किए जा रहे हैं। के साथ साथ मौन का, साइलेंस का कुशल समन्वय चोल साम्राज्य को जीवंत कर देता है। फिल्म ने वर्ष 2022 की लिस्ट में सबसे अधिक 4 पुरस्कार प्राप्त किए हैं। The award for the best cinematography goes to Shri Ravi Varman for the film Ponniyin Selvan Part 1, being awarded with Silver Lotus. ആദ്യത്തെ കരികാലൻ എന്തിനേരം Exotic visuals, captivating frames, angles and movements lend the script a poetic appeal that we witness on the screen. सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का पुरस्कार पा रही हैं मलयालम फिल्म साउदी वेलक्का CC.225/2009 के लिए मिस बॉम्बे जयश्री रामनाथ। आपको रजत कमल का सम्मान। शास्त्रीय गायन की विलक्षण प्रतिभा से सजी आवाज जो गीत की भावुकता को भी समेटती है और जीवन संघर्षों को नए अर्थ भी देती है। 40 years of Srimati Bombay Jayashree. Let's put our hands together, ladies and gentlemen, with all the energy we can. पुरस्कारों के क्रम में सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का पुरस्कार पा रहे हैं श्रीपत पीके, जिनका आज जन्मदिन भी है। तो जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाओं के साथ मलयाली फिल्म मलिकापुरम के लिए बाल कलाकार श्रीपत पीके को रजत कमल। Happy birthday, Shripat. The adventure of a small boy with a sense of humor, courage, timidness, and lively performance that touched the chord with all the viewers. सबसे छोटी उम्र के अवार्डी के लिए सबसे अधिक तालियां। An award now for the best actress in supporting role conferred to Miss Neema Gupta for the film Unchai, being awarded the Silver Lotus. ये सेटिंग किसी ट्रैवलिंग कंपनी की है या प्राइवेटली तुम्हारी? जिंदगी भर तुम्हारे लिए जीती रही। मीरा गुप्ता ने अपने अभिनय कौशल से मानवीय रिश्तों के ताने बाने को संवेदनाओं की गहराइयों से जोड़कर बखूबी प्रस्तुत किया है इस फिल्म में और हासिल किया है अपना 3रा नेशनल फिल्म अवार्ड। And now the best actor in supporting role award. The award goes to Shri Pawan Malhotra for the film Fauja, being recognized with Silver Lotus. मेरी 10 पुश्तों ने भारत माँ की सेवा की है। मैं एक अभागा हूँ सर जी, वो तो नहीं करना चाहता। अपने बेटे को सेना में भर्ती कराने की इच्छा रखने वाले पिता के देश प्रेम को पवन मल्होत्रा ने पर्दे पर जीवंत कर दिया अपने अभिनय से। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार फिल्म कच्छ एक्सप्रेस के लिए प्राप्त कर रही हैं मिस मानसी पारेख गोहिल। राष्ट्रीय, सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों पर आधारित सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार भी मिल रहा है कच्छ एक्सप्रेस को ही और फिल्म की निर्माता भी हैं मिस मानसी पारेख गोहिल, जो ग्रहण कर रही हैं 2 पुरस्कार। आपको रजत कमल का सम्मान। પણ તમારી જોડે આખી દુનિયાએ જોઈશ આને ડ્રીમ કેચર કહેવાય. આ તારા સપના પૂરા કરવામાં તારી મદદ કરશે.
तिचे मारक फुले. The filmmaker is recognized for delicately illustrating the character of a suppressed housewife brimming with immense hope and untapped talent. The best actress in leading role now goes to Miss Nithya Menon for Tamil film Thiruchitram Balam, being conferred the Silver Lotus. చిన్న వయసులోనే అయిపోయింది. Miss Menon being recognized for her skillful portrayal of character, sacrificing her own love for greater good, capturing the sense of selfless devotion. सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार हिंदी फिल्म ऊंचाई के लिए प्राप्त कर रहे हैं श्री सूरज आर बड़जात्या. आपको स्वर्ण कमल गोल्डन लोटस का सम्मान. एवरेस्ट बेस कैंप की ट्रैक दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रैक में से इस प्रेरणादायक फिल्म में श्री सूरज आर बड़जात्या ने एवरेस्ट बेस कैंप की प्रकृति के सौंदर्य के साथ साथ कुशल संपादन, मजबूत पटकथा और भावुकतापूर्ण दृश्यों के माध्यम से बेहतरीन निर्देशन प्रस्तुत किया. Sri Suraj Bajapia occupies a shining spot in the history of Indian cinema. Time now for the best film in animation, visual effects, gaming and comic category. The award goes to Hindi film Brahmastra Part 1 Shiva. Shri Karan Johar receives the Golden Lotus Award on behalf of Dharma Production Private Limited, Star Studios, Prime Focus Limited and Starlight Pictures. क्यों जुड़ा हूं मैं गुरुजी इस अस्त्रों की दुनिया से, क्योंकि तुम खुद एक अस्त्र हो. ये फिल्म भारत की सबसे बड़ी वीएफएक्स प्रस्तुतियों में से एक. फिल्म में 4,500 से अधिक वीएफएक्स इफेक्ट थे, जो संभवतः विश्व स्तर पर किसी फिल्म में सबसे अधिक वीएफएक्स का रिकॉर्ड था. And for the film, Best Film in AVGC category, award goes to director Shri Ayan Mukherjee for the Hindi film Brahmastra Part 1 Shiva, being awarded the Golden Lotus. The filmmaker being recognized for creating a utopian multiverse that seamlessly blends Indian epics and mythology together. राष्ट्रीय, सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों का प्रोत्साहन करने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार कच्छ एक्सप्रेस के नाम. फिल्म के निर्देशक श्री विरल शाह को रजत कमल. आशु Johnny the Caterpillar. Any story नहीं खबर था मैंने. Caterpillar. पेट में पानी है तो नहीं. गुजराती फिल्म कच्छ एक्सप्रेस परिवार को केंद्र में रखकर एक महिला का संघर्ष और उसकी सफलता की कहानी को संवेदनशील तरीके से प्रस्तुत करती है. Award now for the best popular film providing wholesome entertainment goes to Kannada film Kantara. Shri Vijay Kiragandur on behalf of Ombale Films LLP receiving the Golden Lotus. रेडियो सज्जनों, होम्बाले फिल्म्स के लिए ये दोहरी खुशी है क्योंकि फिल्म कांतारा और KGF 2 दोनों ही इनकी दोनों प्रोडक्शंस को मिले हैं दो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार. And staying with Kantara, I invite the director of the film, Rishabh Shetty, to receive the Golden Lotus. He also receives the award for the best actor in leading role. कांतारा एक दिल छू लेने वाली फिल्म जो दमदार तरीके से धार्मिक मान्यताओं के भीतर गढ़ी कहानी के माध्यम से दिलों को जोड़ती है और बंद विचारों की खिड़की भी खोलती है. ऋषभ शेट्टी, जिन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है और साथ ही कांतारा के निर्देशक के तौर पर भी ग्रहण किया पुरस्कार. Ladies and gentlemen, all great journeys begin with a debut. The Golden Lotus Award for the best debut film of a director being conferred to Shri Pramod Punhana for the film Fauja.
निर्देशक प्रमोद पुन्हाना ने अपनी पहली ही फिल्म से अपनी काबिलियत साबित की। एक परिवार की सेना में शामिल होकर देश सेवा की परंपरा को आगे बढ़ाने के प्रयासों को आपने शिद्दत से इस फिल्म में प्रस्तुत किया और बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार मलयालम फिल्म आटम को मिल रहा है। फिल्म निर्माता जॉय मूवी प्रोडक्शंस LLP की तरफ से श्री अजीत जॉय के स्वर्ण कमल का सम्मान प्राप्त करते हुए The film Atom explores the ugly facades of society through a crime against one of the women performers in a theatre group, a play of empathy, love, jealousy, anger, remorse, and quest to remain ahead. And the award for the best screenplay original also goes to Malayalam film Atom. Director and screenplay writer Sri Anand Dekarshi been conferred with Golden Lotus. An intentionally simple narrative that skillfully unravels a complex web of deceit, all within the confines of a small, intimate setting. आटम एक रंगमंच समूह की महिला कलाकार के खिलाफ हुए अपराध के माध्यम से समाज के एक कटु पहलू की पड़ताल करती है। At this point, thank you, Honorable President, for presenting the awards. मान्यवर, अब वक्त है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान करने का। इस वर्ष दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का सम्मान प्राप्त कर रहे हैं हम सबके चहेते ख्यातिलब्ध एवं प्रतिष्ठित अभिनेता पद्म भूषण से सम्मानित श्री मिथुन चक्रवर्ती जी। हिंदी सिनेमा में आपके अतुल्य योगदान के प्रति सम्मान है दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। Ladies and gentlemen, Sri Mithun Chakrabarti is here as we move on to the presentation of this much-awaited Dada Saheb Phalke Award. Let's play a short film that takes us through the life and times of the icon of Indian cinema. The fans like us call him Mithunda. बंगाल की जीवंत गलियों से मुंबई की चकाचौंध तक का ये सफर एक कहानी है गौरांग चक्रवर्ती की बुलंदियों तक पहुंचने की, जिनको देश और दुनिया मिथुन चक्रवर्ती के नाम से जानती है। Gauranga is my birth name, but then from the college side, I was a very popular guy. They used to call me Mithu. Mita se mithas, mita se Mithun. The sweet, sweetest, sweetest is Mithun. 1976 में फिल्म इंडस्ट्री में आए मिथुन को अपनी पहली ही फिल्म मृगया में बेस्ट एक्टर का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। तुमको भी शिकार पसंद, मुझको भी शिकार पसंद। तुमको देना अच्छा लगता है, तो शिकारी है ना। लेकिन उनके स्टारडम को इंतजार था 1982 का, जब रिलीज हुई डिस्को डांसर। इस फर्स्ट वीक में इंडस्ट्री ने उसको फ्लॉप करा दी, क्योंकि ये किस किस्म का डांस है भाई। You know, all this, they thought something vague dancing, but I'm introducing disco. That was beyond their thinking, and it went on to become a legend now. मिथुन ने अपने उस दौर के सभी बेहतरीन अदाकारों के साथ काम किया। उनके साथ काम करने में बहुत मजा आता था, एंड ही इज अ वेरी फ्रेंडली पर्सन, वेरी हेल्पफुल पर्सन। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों प्यार झुकता नहीं जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों का सिलसिला अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि 1991 में आई फिल्म अग्निपथ ने उन्हें एक और नई ऊंचाई तक पहुंचा दिया। इसको रखो दोस्त, तुम्हारा 325 रुपया। दोस्त बोले तुम मेरे को। ये पहले वो हीरो थे जो बंगाल से आए, इनको कोई बहुत बड़ा ब्रेक नहीं मिला था, और फिर उन्होंने जब पहली बार एक कमर्शियल फिल्मों में मौका मिला तो उन्होंने एक अपना यूनिक डांस का स्टाइल इंट्रोड्यूस किया, एक्शन का स्टाइल इंट्रोड्यूस किया। तो ही वॉज दिस टॉल डार्क हैंडसम हीरो। एक लड़के को आप रास्ते में आते जाते आप उनके कॉम्प्लेक्शन के बारे में मजाक उड़ाए, उसका जो दर्द है वो आप ऊपर से नहीं दिख पाएंगे। फिर एक दिन सोचा कि क्या करें, मैं रंग तो बदल नहीं सकता, तो मैं सोचा तो मैं तो डांस करता हूँ, मैं
पैर से डांस करूंगा, और ऐसा पैर से डांस करूंगा कि लोगों की नजरें मेरे पैर के सिवा ऊपर न दिखे, मेरे रंग पे ना जाए, और वही मैंने किया। फिल्मों के अलावा मिथुन दा ने टेलीविजन और OTT प्लेटफॉर्म्स में भी अपना जलवा बिखेरा है। जिस तरीके से उन्होंने डांस के जरिए अपना एक नाम बनाया, एक पहचान बनाया, आई फील इन अ वे ही वाज द बेस्ट महागुरु फॉर अस। मैं सबको बोलता हूँ खुद सो जाना, लेकिन सपने को सोने नहीं देना। मैं खुद सो जाता था, लेकिन मेरे सपने को मैं कभी सोने नहीं दिया। मिथुन दा को 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी नवाजा गया। रूल ढुकैया ढुकैया ढोल ढोला कोई नहीं दूसरे जगह। गुरु भाई के बारे में तुम्हारी क्या राय है? स्वतंत्र होके बोलो, स्वतंत्र होके। मिथुन दा भारत के अलावा रूस, जापान और कई अन्य देशों में भी बहुत पॉपुलर रहे हैं। Mithun Chakraborty, the bright superstar of Indian cinema, is extremely famous not only in India, but also, of course, in Uzbekistan. Films with his participation are watched with great love by Uzbek cinema fans. We most sincerely congratulate Mithunji on being honored with the highest award in Hindi cinema, the Dada Saheb Phalke Award. Jimmy, Jimmy, Acha, Jimmy. Mithun Chakraborty, this is an incredible person. His achievement to unite both nations, because you know, after 30 years of when his movies came to our country, we still remember them, and those memories warm our hearts, and this memory also brings our nations together. In Kazakhstan, in other countries, I hope everybody know about Jimmy Jimmy. Yes. When I was kid, when I was child, I sing this song so many times. Jimmy, Jimmy, आजा आजा। मिथुन दा को सन 2024 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, और आज फिल्म जगत के सर्वश्रेष्ठ सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। We love you. You will always remain our tarana. You will always remain our disco dancer. दादा आपको एक बहुत ही डिजर्विंग दादा साहेब फाल्के अवार्ड की बहुत बहुत बधाई। ये खिताब जो आपको मिला है, ये बनता है आपके लिए, and a grand salute to you for your achievement. Mithun Chakraborty is, I would say, the best choice today for the Dada Saheb Phalke Award. मूवी इंडस्ट्री के डांसिंग सुपरस्टार मिथुन दा, देवी और सज्जनों, अब मैं माननीय राष्ट्रपति जी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि कृपया दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान करने के लिए आगे पधारें। और अब वक्त आ गया है उस पल का जिसका हम सबको बहुत बहुत इंतजार था। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वोच्च सम्मान है, हमारे देश का सर्वोच्च सम्मान है। देवी और सज्जनों, और अब दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मंच पर पधार रहे हैं श्री मिथुन चक्रवर्ती जी। करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें पद्मश्री, पद्म भूषण से सम्मानित, हर दिल अजीज, सादगी भरा व्यक्तित्व, संतुलित गहरे भाव अभिव्यक्ति के साथ विलक्षण अभिनय प्रतिभा के धनी, डांसिंग सुपरस्टार रहे मिथुन दा। A standing ovation is most deserving of the film icon that Sri Mithun Chakravarti is. Being awarded for his never-say-die spirit, his superlative acting prowess, 5 decades of excellence in variety of genres and languages, realizing most importantly the dream of the common man rising above ordinary to reach unfathomable heights of stardom. Mithun Chakravarti, ladies and gentlemen. आम आदमी के सामान्य से ऊपर उठकर स्टारडम की ऊंचाइयों को छूने के सपने को साकार करने के लिए, लाखों लोगों के चेहरे पर मुस्कान, दिल में खुशियां भरने के लिए आदरणीय मिथुन दा को दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार का सम्मान। आपको ढेरों शुभकामनाएं मिथुन दा। Thank you very much. Thank you, Honorable President. I now request Sri Mithun Chakravarti to share his thoughts with us, sir.
सबसे कठिन काम, अवार्ड लो, चले जाओ घर, ताली मारेंगे, आप बोलेंगे स्पीच भी दो। माय गॉड, डायलॉग दे दे तो कितने आसानी से पढ़ लेता हूँ, बोल देता हूँ। अब क्या है, कोई कागज नहीं, कुछ नहीं, क्या बोलूँगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माय रेस्पेक्टेड प्रेसिडेंट, माय रेस्पेक्टेड मिनिस्टर and all the best people, respected people on dais, respected people in the audience and my colleagues, बस इतना ही कहूँगा कि इस मंच पर मैं पहले 3 बार आ चुका हूँ आप लोगों की दुआ से। लेकिन सबसे पहली बार जब मिला था नेशनल अवार्ड, उसके इतने किस्से हैं, कुछ किस्से मैंने बताए, कुछ किस्से मैंने बताए नहीं। तो मैंने सोचा ये दिस विल बी द फर्स्ट टाइम आई विल टेल यू दैट आफ्टर गेटिंग द फर्स्ट नेशनल अवार्ड व्हाट हैपेंड टू मी। वेल, आफ्टर गेटिंग द फर्स्ट नेशनल अवार्ड तो नेचुरली लोगों के कहने लगे कि ये ओ माय गॉड, यू नो यू गॉट नेशनल अवार्ड। तो मेरा ब्रेन थोड़ा खराब होने लगा था, थोड़ा कि कुछ बहुत कुछ बड़ा कुछ कर दिया हूँ। एनीवेज, उस समय फिर कहा गया, बॉम्बे लैब था, तो वहाँ एक स्क्रीनिंग रखा गया कि जिसमें मिल गया, दिखने के बाद अगर पसंद आए तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो मैं भी पहुँच गया। आई थॉट के आफ्टर सीइंग द फिल्म दे मे लाइक मी, दे मे टेक मी। आफ्टर सीइंग द फिल्म आई कांट टेक हिज नेम because he is no more. Because he is no more, I am saying this because before that he was alive. If I would have said, so you would have understood कि मेरे कोई बोल रहा है ये। तो इसीलिए आज तक बोला नहीं, पहली बार बोल रहा हूँ कि स्वर्ग लोग चले गए हैं। तो आफ्टर फिनिशिंग द फिल्म बाहर आए तो आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग विथ हिम एंड आई आस्क्ड हिम, सर पिक्चर कैसी लगी? बोलते बेटा पिक्चर अच्छी लगी, तुम भी कमाल के एक्टर हो, लेकिन तुम कपड़े पहन के कैसे लगोगे? मैं 1 मिनट के लिए चौंक गया कि मैं उनके सामने बगैर कपड़े के खड़ा हूं। क्यों सवाल किया? बाद में याद आया, ओ मैंने जो रोल किया था वो एक आदिवासी का था जिसमें ऊपर मेरे कपड़े ही नहीं थे, तो इसीलिए सोच रहे थे कपड़े पहनने के बाद ये कैसा लगेगा, तभी इसको फिल्म में लूंगा। सेकेंड इंसिडेंट हुआ, ये नेशनल अवार्ड मिलने के बाद दिमाग तो खराब हो ही गया था। मैं अपने आप को एल पचिनो सोचने लगा। रियली मैं सोचा था मैं कुछ कमाल कर दिया, तो मेरे सारे एटीट्यूड चेंज हो गए ना। मैं प्रोड्यूसर के ऑफिस में जाके आके ऐसे बैठता था, कभी कभी यूज करता था कि प्रोड्यूसर मुझे दिखता था क्यों कर रहा है ये सब, और उसको नहीं मालूम था कि मैं अल पचिनो की तरह एक्टिंग कर रहा हूँ। तो फिर थोड़ी देर के बाद मैं पूछता था कि एक काम करना, वो फिल्म की स्टोरी मेरे घर में भेज देना। फिर एक तीसरा प्रोड्यूसर को लगा ये कुछ जबरदस्त, मारा एक लात मुझे, बोलने निकल यहाँ से। उस दिन से मेरा एल पचिनो से गाल पचिनो हो गया। मैं समझ गया कि मुझसे गलती होगी, अब मेरे को कोई काम वाम नहीं देगा, क्योंकि द बिगेस्ट प्रॉब्लम मेरे साथ जो था, एक्टर तो सबने मान लिया था बिकॉज ऑफ माय कॉम्प्लेक्शन। क्योंकि लोग बोलता था अगर ये फिल्म इंडस्ट्री में ये काला रंग नहीं चलेगा तो तुम क्या कर रहे हो इधर, तुम वापस जाओ। तो मैं रास्ते में जाता था, ये कालिया, जितने हो सके आप, यू कैन अंडरस्टैंड, अपमान जितना हो सके। तो मैं सोचने लगा मैं करूं क्या। मैं भगवान से पूछता था कि भगवान कि मेरा ये रंग तू चेंज नहीं कर सकता, लेकिन नहीं चेंज कर सकता था भगवान। तो मैं सोचने लगा करूं क्या। तो मैंने सोचा तो मैं तो डांस कर सकता हूं, तो मैं डांस कर सकता हूं, तो मैं ऐसा डांस करूं मेरे पैरों से, ताकि लोग मेरे पैरों को देखे, मेरे स्किन को ना देखे, मेरे कलर को ना देखे। और मानिए मैंने एग्जैक्टली वही किया।
आप मेरी फिल्म देखिए, सब फिल्मों में पैरों से डांस किया, पैर को थिरकने नहीं दिया, रुकने नहीं दिया कहीं भी। और लोग मेरे रंग को भूल गए और मैं बन गया सेक्सी डस्की बंगाली बाबू। मैं बहुत शिकायत करता था भगवान से, बहुत, क्योंकि मैं माई लाइफ इज नॉट ऑन प्लेटर। जो कुछ भी मुझे मिला है स्ट्रगल करके मिला है। आई डिडंट गेट इट जस्ट लाइक दैट। तो मैं भगवान से कहता था, तूने नाम दिया, शोहरत दी, फिर इतनी तकलीफ क्यों दे रहा है, हर चीज में क्यों तकलीफ? बहुत शिकायत करता था। तो एक दिन मैं ऐसे ही सोच रहा था कि शायद यही तरीका होगा, लेकिन नहीं, ऐसा तरीका नहीं था। आज ये अवार्ड मिलने के बाद मैं शिकायत करना छोड़ दिया। मैंने कहा थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू बूढ़ो शिव, थैंक यू दानी बाबा, थैंक यू भद्रो लोग। कलकत्ता में नीमतला से एक पुराना सा मंदिर है, जहाँ एक 10 फीट ऊंचा एक शिवलिंग है, जहाँ सीढ़ियों से चढ़ के जाके पानी देना पड़ता है। मैं कितने साल मुझे याद नहीं, मैं उनकी सेवा किया। तो उनको मैंने कहा थैंक यू, अब मैं शिकायत नहीं करूंगा, क्योंकि आपने मुझे सूद के साथ सब कुछ वापस कर दिया है। मुझे मालूम है अगर ये मैं नहीं कहूंगा तो यहाँ जितने हैं, यहाँ जो सारे हैं ना बैठे हुए इधर, इन लोगों ने कहा कि दादा आपको जो कुछ भी कहे, लेकिन आपको ये कहना जरूरी है कि जो यंग लड़के लोग आ रहे हैं फिल्म लाइन में, उनको आप क्या कहना चाहेंगे। मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे देश में बहुत से टैलेंट है, बहुत से टैलेंटेड लड़का लड़की, लेकिन पैसे नहीं है उनके पास, मेरी तरह। दे डोंट हैव मनी। लेकिन मैं उनको कहूंगा हिम्मत नहीं हारना, पैसा नहीं भी हो, हिम्मत नहीं हारना, और सपना जरूर देखना। सपना जरूर देखना, लेकिन इतना याद रखना, खुद सो जाना, लेकिन सपनों को कभी सोने नहीं देना। क्यों? इसलिए अगर मैं बन सकता हूं तो तुम सब बन सकते हो। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। अति सम्मानीय मिथुन दा, आपके हृदय स्पर्शी उपकारों के लिए आपका आभार। आपको दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए ढेरों शुभकामनाएं। लगभग 5 दशक का आपका फिल्मी सफर, भारतीय सिनेमा में आपके योगदान को सदैव स्मरण किया जाता रहेगा। और अब मैं माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से सविनय निवेदन करती हूं कि कृपया अपने सुवचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। आज के इस राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में उपस्थित सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन जी, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण, निर्णायक मंडल के अध्यक्षगण एवं सदस्यगण, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, आज के सभी पुरस्कार विजेताओं को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। मुझे बताया गया है कि बहुत सी फिल्में पर विचार करने बाद आज की पुरस्कृत फिल्में चुनी गई है। सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन एवं समीक्षा के लिए भी
अनेक पुस्तकों और समीक्षकों का आकलन किया गया है। इसके लिए मैं निर्णय को मंडल के अध्यक्ष सहित सभी सदस्यों की सराहना करती हूँ। किसी भी फिल्म को बनाने में बहुत से लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। आज के पुरस्कार विजेताओं की टीम के सभी सदस्यों को भी मैं बधाई देती हूँ। अनेक भाषाओं और देश के सभी क्षेत्रों में बनाई जा रही फिल्मों के आधार पर भारतीय सिनेमा विश्व का सबसे बड़ा फिल्म उद्योग है। साथ ही ये सबसे अधिक विविधतापूर्ण कला क्षेत्र भी है। पूरे देश में फिल्म उद्योग के सभी आयामों से जुड़े लोगों की मैं सराहना करती हूँ। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सभी मिथुन चक्रवर्ती जी को मैं विशेष बधाई देती हूँ। स्वाधीनता सेनानी तथा ओडिया भाषा के प्रसिद्ध लेखक भगवती चरण पाणिग्राही द्वारा लिखित एक कहानी शिकार हमारे स्कूल के पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता था। उस कहानी में न्याय और अन्याय को अपनी सरल और सहज दृष्टि से देखने वाले भोले वाले आदिवासी युवक घेनुआ का मार्मिक चरित्र मेरे मन में आज भी अंकित है। मिथुन चक्रवर्ती जी ने अपने पहली ही फिल्म मृगया में उस अनोखे चरित्र को जीवंत बनाया तथा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय पुरस्कार पर सम्मानित हुए। अब तक लगभग 5 दशकों की अपनी कला यात्रा के दौरान मोथिन जी ने गंभीर चरित्रों के पर्दे पर उतारने के साथ साथ सामान्य कहानियों को भी अपनी विशेष ऊर्जा से सफलता प्रदान की है। उनकी लोकप्रियता का दायरा अन्य देशों तक तो फैला हुआ है। यह जानकर मुझे प्रसन्नता हुई है कि ये समाज कल्याण के अनेक कार्यों में संलग्न है। इसके लिए मैं उनकी बहुत बहुत सराहना करती हूँ और बधाई देती हूँ। आज के कुल पुरस्कार विजेताओं की संख्या 85 से अधिक है, लेकिन महिला पुरस्कार विजेताओं की संख्या केवल 15 है। मैं शिक्षण संस्थानों के कई कन्वोकेशन फंक्शंस में जाती हूँ। अधिकांश उच्च शिक्षण संस्थान में पुरस्कार प्राप्त करने वाली छात्राओं की संख्या छात्र से अधिक होती है। ऐसे ही बदलाव रोजगार और उद्योग जगत में भी होना चाहिए। फिल्म उद्योग द्वारा वीमेन लेड डेवलपमेंट की दिशा में और अधिक प्रयास किया जा सकता है। मैं मानती हूँ कि फिल्में और सोशल मीडिया समाज को बदलने का सबसे अधिक मजबूत माध्यम है। लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए जितना असर उन माध्यमों से पड़ता है, उतना किसी और माध्यम से संभव नहीं है। मैंने आज पुरस्कृत की गई फिल्मों के संक्षिप्त विवरण पर एक निगाह डालना चाहती हूँ। मैं बहुत सी फिल्में से प्रभावित हुई हूँ, लेकिन समय सीमा को ध्यान में रखते हुए कुछ ही फिल्मों का उल्लेख कर पाना संभव हो रहा है। इन पुरस्कृत फिल्मों की भाषाओं और परिवेश भले ही अलग हो, सभी फिल्मों में भारत की झलक मिलती है। इन फिल्मों में भारतीय समाज के अनुभवों का खजाना है। इनमें भारत की परंपराएं और उनकी विविधता सजीव हो जाती है। हमारी फिल्में हमारी समाज के कलाबोध को प्रदर्शित करती है। जीवन बदल रहा है, कला के प्रतिमान बदल रही है, नई आकांक्षाएं जन्म ले रही है। नई समस्याएं सामने आ रही है, नई जागरूकता भी पैदा हो रही है। इन सभी बदलावों के बीच आपसी प्रेम, करुणा और सेवा के कभी न बदलने वाले जीवन मूल्य आज भी हमारे व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन को सार्थक बना रही है। ये सभी बातें आज पुरस्कृत हुए फिल्म में देखी जा रही है। नई फीचर फिल्म में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार फ्रॉम द शैडोज नामक फिल्म के लिए दिया गया है।
अपने आतिथ्य और गरिमा के लिए अनेक समस्याओं में लड़ती हुई महिलाओं के संघर्ष और पर आधारित ये फिल्म चाइल्ड ट्रैफिकिंग की गंभीर समस्या को उजागर करती है। ये समस्या बेटियों की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। ऐसी फिल्में समाज को जगाती है और रास्ता दिखाती है। देवियों और स्वजन, असम की सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर बिरुवाला राभा ने डायन लांछन जैसे अंधविश्वास के विरुद्ध दृढ़ता से मुकाबला करके एक सामाजिक बुराई को दूर करने में असाधारण योगदान दिया है। उन्हें अपनी जान बचाने के लिए जंगल में शरण लेना पड़ती है। समाज को जागरूक बनाने तथा पीड़ितों को सहारा देने के लिए उनके असाधारण योगदान हेतु उन्हें वर्ष 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। उनकी प्रेरक जीवन गाथा पर आधारित असमिया भाषा में बनी बिरुवाला विश टू पद्मश्री जैसे फिल्में अनकही कहानियों को लोगों तक पहुंचाती है। सर्वश्रेष्ठ ओडिया फिल्म का पुरस्कार प्राप्त करने वाली फिल्म दमन का संदेश भी अत्यंत प्रेरक है। एक युवा डॉक्टर द्वारा जनजाति बहुल गांव में अनेक संकटों का सामना करते हुए लोगों की सेवा करने का असाधारण उदाहरण सभी के लिए अनुकरणीय है। निस्वार्थ संघर्ष, सेवा और करुणा के जीवन मूल्यों के पर आधारित समाज जो दूर आगे बढ़ेगा, ये उनका संदेश था। सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कच्छ एक्सप्रेस की पूरी टीम को मैं बधाई देती हूँ। महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रहों को दूर करने में कच्छ एक्सप्रेस जैसी फिल्में सहायक होगी यदि उनका व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाए। ऐसी फिल्मों द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने का संदेश मिलता है। सर्वश्रेष्ठ पंजाबी फिल्म बागी दी थी की कथानक ने मेरा ध्यान आकर्षित किया। एक स्वाधीनता सेनानी की बहादुर बेटी ब्रिटिश हुकूमत का विरोध करते हुए अपने जीवन का बलिदान कर दिया है। देश प्रेम के आदर्शों को जीवंत बनाए रखने में हमारे फिल्मों ने सराहनीय योगदान दिया है। राष्ट्र के साथ भावना के स्तर पर लगाव होने से कोई भी व्यक्ति अपने कर्तव्यों को निभाने में तथा राष्ट्र निर्माण में अधिक उत्साह के साथ अपना योगदान करेगा। हरियाणवी भाषा में बनी फिल्म फौजा के निर्देशक को राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट डेब्यू फिल्म की निर्देशक हेतु पुरस्कार दिया गया। भारतीय सेनाओं के प्रति गौरव की भावना से ओतप्रोत ये फिल्म हमारे सैन्य बलों का सम्मान बढ़ाए है और हमारे युवाओं से सेना के प्रति आदर और आकर्षण भी पैदा करती है। कला और संस्कृति से जुड़ी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार कन्नड़ा भाषा में बनाई गई फिल्म रंग विभव का मिला है। कर्नाटक के मंदिरों में नृत्य कला की 2000 वर्षों से भी अधिक पुरानी परंपरा को ये फिल्म दर्शाती है। ऐसी फिल्मों हमें अपनी कला की समृद्ध परंपराओं के बारे में अच्छी जानकारी देती है तथा सांस्कृतिक गौरव का भाव भी उत्पन्न करती है। मलयालम भाषा में बनी फिल्म मालिकपुरम में उत्कृष्ट अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का पुरस्कार प्राप्त करने वाले मास्टर श्रीपद को मैं आशीर्वाद देती हूं कि वे जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहें। देवियों और स्वजन, प्राय सार्थक फिल्मों का दर्शक नहीं मिल पाते हैं। करोड़ों रुपयों की लागत और कमाई से जुड़ी फिल्मों के बारे में ट्रेड जर्नल्स तो लिखती ही है। समाचार पत्र भी उन्हीं फिल्मों के रिव्यूज और रिपोर्ट्स को अधिक महत्व देती है। फिल्म प्रमोशन में खर्च करना फिल्म की सफलता का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। ऐसी स्थिति में आर्थिक शक्ति ही फिल्म जैसी महत्वपूर्ण
विधा को नियंत्रित करती नजर आती है। आज पुरस्कृत अनेक फिल्में बनाने वाला उस तरह की आर्थिक शक्ति से संपन्न नहीं है जो बड़े बजट वाली फिल्मों को आगे बढ़ाती है। इसीलिए समाज के प्रबुद्ध नागरिकों, सामाजिक संस्थाओं और केंद्र तथा राज्य सरकारों को सार्थक सिनेमा की पहुंच को बढ़ाने के लिए मिलजुल कर निरंतर प्रयास करना होगा। मैं भारतीय फिल्म उद्योग से जुड़ी सभी लोगों की स्वर्णिम भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you, Honorable President. And now may we all rise for the national anthem.